So I'll ask them to join, any one of you, any one of them to look into this issue. Yeah, Niranjan, I given your requirement. Yeah, I mentioned it to my team. I WhatsApp them the screenshot. So first session में मुझे absent दिख रहा है. I don't know. See, guys, let me tell you clearly. ये आपका attendance रहने दो, technical issues, recording नहीं मिल रहा है, file नहीं आ रहा है. I am not the right person. I am here to teach you. You ask me anything related to Excel, I'll try to answer it. Try नहीं 99% तक बोल ही दूंगा. हेलो सर, हेलो Yes, सर, भाई. प्रश्न पर राहुल सेम इशू रिलेटेड टू मी वो है फर्स्ट लेक्चर जो मैंने किया था वो अभी एब्सेंट दिख रहा है मेरे डैशबोर्ड पे क्योंकि वही बोल हमारा रहा हूँ. जो मुझे वो सब के बारे में मालूम नहीं है. कार्तिक, So I don't know हमने anything about the किया है। dashboard. कार्तिक, am I audible? Hello sir. Yes. Hello sir. Yes, Kiran Rathod has joined. He's going to answer your queries, guys. So take 5 minutes time and quickly like give your, I mean, what is the problem you are facing? Please check with the Kiran. He'll be answering it. Okay. Hello, Guys, sir. yeah. Tell me. हेलो सर, मैं फर्स्ट लेक्चर को प्रेजेंट था लेकिन Okay. अभी एब्सेंट दिख रहा है वहाँ पे डैशबोर्ड। मैंने क्वेरी भी डाली है। Okay. सो ऐसी क्वेरी आप और किसी को ऐसे मेंशन हो रहा है क्या? हाँ सर, हाँ हेलो हेलो सर। सर, मुझे भी फर्स्ट सेशन में एब्सेंट दिखा रहा है सर, अभी 2-3 yes, दिन। सेम मेरा भी सेम सर हाँ, सबका है। सबका with everyone. Okay. Yes, sir. So I think there is a technical issue from my side. We are working on it. So there is no an issue that it is mentioning absent, but we have other records too. ठीक है, तो आप उसका वरी मत कीजिए. हमारे पास प्रेजेंट के अलग से रिकॉर्ड्स होते हैं, तो बाद में जब टेक्निकल इशू सॉल्व हो जाएंगे तो आपके वो प्रेजेंट दिखा देंगे. ठीक है, Sir, I आपने जो also भी have क्वेरीज a- आपने क्वेरी फॉर्म में डाल दिया, राइट? Yes, sir. query डाल query- दिया। यस ओके. हाँ, सर, आपकी टीम से कोई कॉल क्यों नहीं रिसीव करता? हम जब कॉल करते actually हैं आपने रिमाइंडर डेट्स वगैरह वो जो लोग। नहीं, शायद से सर, कॉल नहीं पड़ेगा. तो आप सर, क्वेरी मैंने बहुत बार कॉल किया है, जो रिमाइंडर डेस्क का जो नंबर भी मिला है हमको, मैंने बहुत बार Okay. ट्राई किया कॉल का, लेकिन कोई रिसीव नहीं किया और कॉल बैक भी नहीं किया. इससे पहले किया गया था, लेकिन अभी नहीं Okay. किया कर रहे. तो एक काम कीजिए, आपको मतलब जिसको ऐसे थोड़े जो भी क्वेरीज यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, राइट, जिसको एब्सेंटीज आ रहे हैं और जिसको अदर क्वेरीज, आप मुझे चैट पे एक बार मेंशन कर दीजिए नेम प्लस उनका एक क्वेरी. ठीक है, मैं वो रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट को रजिस्टर रिपोर्ट कर दूंगा. ठीक है, अभी आप मुझे कार्तिक, आप यू टेक द सेशन और जिसको भी इश्यूज आ रहे हैं आप मुझे मेंशन कर दीजिए कमेंट पे, चैट बॉक्स पे. ठीक है, नेम प्लस योर क्वेरी, मैं वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर दूंगा. ठीक है, अभी क्योंकि वी हैव अ वैल्यूएबल टाइम. सो कार्तिक, यू काइंडली स्टार्ट द सेशन. Sure. ठीक है, आपको जो भी क्वेरीज आ रहे हैं आप मुझे चैट बॉक्स में पर्सनली डायरेक्ट मैसेज कर दो मुझे. ठीक है. Yeah. So guys, some of you are messaging me directly, not me. You need to message to Kiran Rathod. So Yes. Kiran Rathod को होस्ट बोल के दिखता है आपको clearly. So उनको मैसेज करना है, please. So if you are asking anything related to administration related, I am not going to answer it. Please don't mind because we need to take care about the class as well, right? So is this clear to everyone? You need to message to Kiran Rathod. He is there in the training now. In the chat box में आप drop down click करो, आपको starting में second में मिल जाएंगे. नहीं तो search box में किरण बोल के टाइप करो, आपको दिख जाएगा. उनको मैसेज करना है. Yes, Karthik, you can start Yeah. taking the session. Okay. Yeah, Yeah. sure. Thanks. Yeah. So guys, what we were discussing in the previous session, anyone of you remember? I'm sharing my screen and we'll start this. Yeah, what we discussed, Satish, Gajanan, Gauri, Yes, different Pooja. formulas. Yeah, what are they? Let me share my screen. Here you go. So we discussed about the freezing techniques last time, like and text functions, date and time functions. Right now, I'm going with the logical functions. See here, logical functions. So logical functions, there are so many logical functions are there. So one of the simple logical function called AND. This AND formula, if you see here, and it is asking for the logic 1, comma logic 2, comma dot dot dot. Any formula ending with the 3 dots means it is an unlimited arguments formula. So here is a logic 1. Like what is this AND formula does is like checks whether all arguments are true and returns true if all arguments are true. Means you give the first argument, comma, second argument also. If you have the third argument also, you can give the third as well. In this case, we have only 2. You give these 2 arguments, bracket close and enter, it is giving the true. Why true? Because true and true is a true. If I drag it down, it is giving this true and false as a false, false and true as a false. So nothing but only true and true is true. So AND formula is very strict. All the logics output should be true. Output 1 should be true, output 2 also should be true. If there is an output 3 as well, that also should be true, then only it is a true. Simple words में बोलना हो तो, like if you pass in all the subjects, then only your overall result is pass. So same way it is. If you pass in the one subject and if you fail in another subject, so your overall it is a fail. That's how AND formula works. Now I'll show you another formula called OR equal to OR.
this formula look like same as a and only, but the difference here is checks whether any of the arguments are true and returns true. Otherwise false. Means what? You give the logic 1 and logic 2, at least one of them should be true. In this case, both of them are true, no problem. So overall output will be true. If I drag it down, next one is true, another one is a false. एक पास है एक फेल है, फिर भी वो पास ही है. क्यों बोले तो in or at least one of them should be true. So here false and true, again it is a true. If I drag this down, can you guess the answer? False and false. What will be the answer, guys? False. It is false, absolutely. Because if you fail in both the subjects, no one can help you out. So or at least one should be true. In the and, all of them should be true. So what is the use of this and or? We'll be learning in few minutes. So let me show you my favorite formula here. I have some mocks here, student mocks, and I want to get the results. Here in Telangana state, like pass marks are 40. I guess it is the same with you as well. So let's assume if someone got the 55 marks, is it pass or fail? I just want to write pass or fail. So someone got the 55 marks. We said 40 is the minimum marks. Nothing but 40 आया तो pass है. So इनको तो 55 आया है. So is it pass or fail? Sir, pass है sir. Yes, pass. Next one, 22. उसका Fail है sir. fail. Next one. Pass है sir. So we cannot type like this. Pass, pass. Is this pass or fail? 40 exactly 40 है. Sir, pass है. स्टिल इट इज पास. बॉर्डर मार्क्स है फिर भी पास है. करेक्ट. ऐसा एक एक करके देना है. तो लाइक मेरे पास thousands ऑफ रिकॉर्ड्स है, उन सबका रिजल्ट्स देना है मुझे. So I cannot do like this manually one by one. Instead, let's use this formula now. So that formula is if. So if formula सीखने वाले हैं, बहुत ही important है ये formula. This formula is very important. So let's learn this. So I go here. I'll write equal to f. There is a formula called f. इससे पहले मैं क्या कर रहा था? What I was doing is that 55 is greater than or equal to 40? In my brain I was asking. Instead you ask in your brain, you write this formula called f. Let me zoom it for you. You see here f, logical test, value of true, value of false. These are the three arguments it is having. Logical test. Logical test means condition. You can consider logical test as a condition. Whenever you give the condition, some condition, that condition output will be either true or false. अगर वो true है तो क्या करना है? यहाँ बोलना है. If it is a false, what needs to be done? You need to tell here. If it is a true, what you need to do? You need to tell here. If it is a false, what needs to be done? You need to tell here. So the total three arguments in the if formula. Logical test means condition. So I'm giving the condition that I'm asking that, hey, is this U12 cell which is having some number, nothing but in this case 55, is that 55 is that greater than or equal to 40? We are asking this query, this question. So when you ask this question, so logical test का यहाँ click करें तो देखो आप true बोल के बता रहा है. True बोल के क्यों बता रहा है? Why it is showing this true? Because 55 is greater than or equal to 40. अगर ये 55 नहीं 10 marks है तो then it would have shown the false. So as it is a true, what needs to be done? You need to tell it in the second argument. How do you go to second argument? Put the comma. Don't write directly. Once you put the comma, it is clearly showing that value of true. बोले तो like it is showing that bold value of true. What needs to be done? So you need to see that arguments. कौन सा argument देना है देखना है. So value of true place में we need to give the pass. How do you write the pass? Within double quotes. Any manual input you need to write it in the double quotes. Otherwise, if it is greater than or equal to 40, it is a true. If it is a true, value true place में अपन pass बोल के लिखे. नहीं तो comma. If it is not, value false, I'll write it as a fail. Double quotes close, bracket close, enter. Now drag the formula down. So you can see this. It is showing all the pass and fail. Is this clear, guys? Can you repeat? Yes, sir. Okay. I'll go here. I'll write this formula again. Equal to f. It is asking for the three arguments. Logical test. In the place of logical test, I refer to logical test means condition. I refer to the cell. Is it greater than or equal to 40? If it is so, if this logical test output is a true, then your value true place में मैं लिख रहा हूँ pass बोल के, नहीं तो fail. इतनी सी बात है. That's it. And once you're done with the formula, here is a teeny square box. Double click on it. Fill button को drag करो. नीचे. ऐसे double click करो. Pass fail आ गया. नहीं यहाँ 22 नहीं है, ये 72 है बोल के change करें तो obviously change it to pass. This 26 if I change it, 27 if I change it, it's showing as a fail. So like this it will get changed. So same formula one more time I'll write it. Alternative way. I'll write equal to f. Pass marks are same 40, no change. I refer to the cell. Is it less than 40? I'll ask. Less than 40. So if it is less than 40, मुझे value true में क्या लिखना है? What I need to write in the value true? Can you tell me, guys? Fail. Absolutely, you are pass. So whoever said fail, they are pass. And value false place, we need to write the pass. Enter and drag the formula down. Is this clear, everyone? Yes, sir. So here is the sales numbers, and here is the discount amount I need to calculate. SC1, nothing but scenario 1. Let me show it. Calculate discount of 10% on sales if the sales figure is more than or equal to 50,000. Else discount amount is 5% of the sales. So ऐसा आजकल Amazon का offer चल रहा है ना, like a Great Indian Festival. What do you call? So in that, like let's assume this is the offer they are giving. If you purchase 50,000 or more than that, Amazon is giving the 10% discount on your sales, on your purchase. Otherwise, they'll give only 5% discount. So now you guys tell me, someone purchases 60,000. What is the discount amount?
What is the discount amount? 10%. Discount amount पूछ रहा हूँ जयेश, Sir, not 600. the percentage. Sorry, So 6,000. 6,000. Here is a 6,000. What is the next? 7,000. 7,000. 7,000. Next one, 5,000. 5,000, and next one is 7,500, and next one, 7,800. 7,800. 7,800. Yeah. What is this next one? 300. No, sir. Vishali, you've given all the correct answer, but here वो जल्दी में आप गलती बोल दिए. ये इसमें 5% होगा ना? It's a 5% ही होगा ना. So that's what the condition is. If the sales amount is 50,000 or more than that, then only it is a 10%. Otherwise 5%. On Yes, yes, 3,000, 5% we need to calculate. So it is a 150. Agree? yes, sir. So in hurry, we do the mistakes. So when we're doing manually, like this kind of mistakes are very common. So let's not do this manual way. Let me delete this. Instead of doing this calculation one by one, let me do it with the formula. Equal to F लॉजिकल टेस्ट. इससे पहले अपने ब्रेन में पूछ रहे थे, हे ये 50,000 से ज्यादा है क्या? हाँ बोल के अपना ब्रेन बोले तो जब 10% कैलकुलेट कर रहे थे, राइट? सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वे, व्हाट वी डू, लॉजिकल टेस्ट, आई रेफर टू द सेल्स नंबर, इज दैट ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000. 50,000. एब्सोल्युटली. इफ इट इज सो, अगर है तो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो देन इट इज अ ट्रू, राइट? कामा, इफ दैट इज अ केस, इफ दिस इज अ ट्रू, वैल्यू ट्रू में क्या करना है अपन को? वैल्यू ट्रू व्हाट यू नीड टू डू? 10%. 10%. 10% on the sales, correct? So ये sales को पकड़ो, select the sales into 10%. Otherwise, comma, if it is not, if this is not greater than or equal to 50,000, then value false. What we do, we refer to this above cell and go down. So I mean, same cell को refer करना है, ये overlap हो रहा है, उसलिए ऊपर जाके नीचे आया. Into 5%, bracket close and enter. अब देखो 6,000 है, 60,000 है, इसलिए 6,000 10% कैलकुलेशन हुआ है. Drag it down. यहाँ देखो 3,000 का 150 आया, not 300. अग्री. अगर ये 60,000 नहीं, ये just 40,000 है तो इसके ऊपर 2,000 बोल के आ रहे हैं, not 4,000, because it is a 5% calculation only. Control Z. So is this clear, guys? Yes, sir. Yes, sir. So this scenario 2, scenario 3 मैं clearly query लिखा हूँ मैं यहाँ. So आप यहाँ जाओ, उसका solve करो बाद में. That's your query. You can do it later. Now I'll show you nested if. I'm showing you this nested if. Nested if बोले तो within the if one more if, within the if one more if, like this we need to write. So that is the nested if. In the previous example, it is just one if is enough. But in this case, we have the salaries. If someone's salary is less than 50,000, grade C. 50 to 1 lakh, grade B. More than 1 lakh is a grade A. So nothing but there are 3 conditions. So as there are more than 2 conditions, so we need to write the nested if. Anytime more than 2 outputs है तो nested if लिखना पड़ेगा. So here equal to if logical test. What is the logical test? I refer to this cell. Hey, I'll go with this condition one by one. Is that less than 50,000? I'll ask. If it is so, no doubt. अगर ये number 50,000 से कम है तो grade C, right? You go here. Write the grade C, double quotes close, comma. Agar nahi to, if it is not less than 50,000, it could be grade B or it could be grade A also. We don't know until unless we check it again. So in the value false place, I am writing the if again. In the logical test, I am referring to this cell. I want to write is that less than or equal to 1 lakh. Then if it is less than or equal to 1 lakh. If it is less than 50,000, it is grade C. If it is not, then only it will come here, right? If this is less than or equal to 1 lakh, nothing but it is a grade B. So I'll write the grade B. Else remaining is a grade A only. Value false place, there is no one more condition required, one more if not required, because that is the last one. So I'll write a grade A here. Double quotes close, bracket close for this if and bracket close for the previous if. Enter. Now once I drag down, it is giving the results. Understood this, guys? Sir, repeat once. Okay, sure. I'll delete all of them. I'm writing this formula again. Equal to if. Equal to if. I refer to this cell. Is this less than or less than 50,000 alas? If it is so, it is a grade A. Otherwise, value false. Less than 50,000 is the grade A. Oh, sorry, grade C. That's my bad. Less than 50,000 is the grade C that we know. Otherwise, if it is not less than 50,000, then you cannot tell is that grade B or grade A. Agree. So for this, we need to write the one more F. Here I'm referring to this cell. So next condition I'm writing that it is actually between condition 50 to 1 lakh. Instead of writing the 50 to 1 lakh here, I'll write that less than or equal to 1 lakh. Because up to 50,000 already we checked. If it is less than 50,000, we'll write the grade C. अगर ये condition satisfy नहीं हुआ तो ये इसके अंदर आता है. If this condition is not satisfied, then it will come here. So if it is less than or equal to 1 lakh, then comma, what do you want? It should be grade B. Grade B. Otherwise, value false. अगर ये भी condition, ये इस condition satisfy नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ तो remaining is the grade A only. So I'll write the grade A. So bracket close for this if. यहाँ देखो red color matching है. ये if open करे थे, इसके अंदर ही A if लिखे थे, इसका close नहीं करे अभी तक. So if once I close it, you can see this black color and here also black color. So last parenthesis always will be in the black color. अंदर का कुछ भी color रह सकता है, बाहर का तो कभी भी black color रहेगा parenthesis में formula का.
Drag it down and you can see this results. 1,90,000 है ना, 1,90,000 बोले तो ग्रेड ए ना, वही बता रहा है. 6,000 बोले तो 50,000 से कम है ना, ग्रेड सी. Yes, it is a grade C. 10,000 भी ग्रेड सी. और 75,000 change, that is the between 50 to 1 lakh, it is a grade B. Is that clear, guys? बोलो. हाँ बोल रहा हूँ सर, उस फॉर्मूला में हम लोग लेस देन इक्वल टू के जो जगह पे जो हम 5 लाख टू 50,000 टू 1 लाख लिख सकते हैं क्या वहाँ पे? यहाँ लिखना बोले तो देखो लिख सकते हैं, मगर लॉजिकल टेस्ट में एक ही कंडीशन लेता है, वो मल्टीपल कंडीशन नहीं लेता है. अगर सच्ची में आपको ऐसा लिखना है बोले तो मैं यहाँ बताऊंगा. इक्वल टू एफ, आई रिफर टू दिस वन, आई रिफर टू, आई मीन इसको थोड़ा ऐसा चेंज करेंगे आपको बहुत अच्छा समझ में आने के लिए. सो 0 to 50,000 इज ग्रेड सी सोचेंगे. इसको कैसे लिखते हैं? इक्वल टू एफ. इससे पहले तो अपन लेस देन 50,000 बोल के बोले थे, करेक्ट. अभी मुझे 0 to 50,000, 0 से कम आए तो भी उसको कुछ भी नहीं लिखना है. सो 0 to 50,000 ओनली ग्रेड सी, करेक्ट. सो इन सच केस व्हाट यू डू, लाइक इन द लॉजिकल टेस्ट it can take only one condition. How can you take this 0 to 50,000? Nothing but is a between. So you can take the and formula within inside of it. Here you write the logic one. Is this number greater than or equal to 0, comma, logic 2 में salary 1 is it less than or equal to 50,000, bracket close. ये both the condition and formula में ये condition satisfy होके और ये भी condition satisfy हुए तो ही देखो ये condition satisfy हुआ है. Is it greater than or equal to 1,90,000? 0 से ज़्यादा है क्या? हाँ, true बोल के बता रहा है. Logic 2, is it less than or equal to 50,000? No, 1,90,000 is not less than or equal to 50,000, so false बोल रहा है. And में एक true आके एक false है तो क्या होता है? Overall result will be false. So if it is if any case if it is a true, if the logical test output is a true, nothing but it is a between 0 to 50,000. In that case, it is a grade C. So I'll write the grade C. Right. So comma. Now next one, value false. I'll write the one more F. This time it is a 50,000 to 1 lakh, right? So you write the and once again. You refer to this. Is that greater than 50,000? Comma. Same salary less than or equal to 1 lakh. If both the conditions are satisfied, then you write the grade B. Otherwise, remaining is a grade A only. So bracket close and bracket close. Enter. I'll drag the formula down. So here you see this. We return the both this to this between. Is that clear? यस सर. मैं दो भी मेथड बताया हूँ, आप लोग ट्राई करिए. बाद में आपके लिए होमवर्क भी दे रहा हूँ. दसरा दिवाली बहुत हॉलीडेज आ रहे हैं ना आप लोगों को. सो जब प्रैक्टिस करने के लिए आई एम गिविंग सो मच होमवर्क. आई हैव द सैलरीज हियर इंस्टेड ऑफ जस्ट 3 ब्रैकेट्स 3 grades. This time I given the 5 grades. So try that. Hello. Yes, please. Yes, Voice Kamlesh. is not audible. How about others, guys? Kamlesh is saying that my voice is not audible. How about others? Audible, sir. ऑडिबल है. Audible, sir. All clear. Yeah. Kamlesh, सुने ना? So problem is from your end. So please look into it. Yeah. Here, one more. I have student names here, and there are 3 subjects. These are the 3 subjects they written in the exam. So pass marks are 40, same 40, change नहीं है. ये बंदा पास हुआ है नहीं हुआ है बोलो मुझे. Is this guy passed or not? Pass. Okay. How about student 2? Gauri? Rahul? Pass. Oh, is it? Nilanjan, Prajwal, Pooja. रिपीट करेंगे एक बार. सिंपल सा क्वेश्चन है. ये है स्टूडेंट नेम्स है. सर मैंने Pass नेक्स्ट marks कर are लगा 40. था. First student is passed because he passed in all the 3 subjects. Second student, even though he got 100 out of 100 in maths, but he failed in English, so it is fail only. Agree? आपके एग्जाम में कैसे रहता है फाइनल एग्जाम में? So all the subjects need to be passed. They don't need to be passed. Otherwise it is a fail. Agree? Correct. Yes, sir. So same यहाँ भी है ऐसा ही है. So what you need to understand is there's a pass, there's a fail. Again, how about this student 3? Is a pass or fail? Pass. Pass. Oh, all the border marks, but still it is a pass, right? So we cannot find like with our eyes, hey, this guy is pass, this guy is fail. एक नहीं कर सकते हैं because there are thousands of student names. I want to do this very quick. In that case, let's use the formula now. I use this F. Don't write logical test place only English का मत देखो. आपको English, Maths और Science तीनों का देखना है. मगर logical test में एक ही देख सकते हैं. So what you can do, you can write the formula and here you can refer to this English. Is that greater than or equal to 40? Comma logic 2 and लिखे तो क्या है? Logic 1, logic 2, logic 3. N number of logics you can give. Logic 2 is what? Maths. Is that greater than or equal to 40? Comma Science also greater than or equal to 40. Bracket close. So you see here this and formula will give you true or false. कैसा देता है true or false? ये ट्रू होके ये ट्रू होना, ये भी ट्रू होना, जब भी ट्रू देता है. देखो लॉजिक 1 में ट्रू है, लॉजिक 2 also true, लॉजिक 3 also true. So as all the logics are true, and formula is giving the overall output as a true. So if that is the case, comma value of true place, what do you write? You write it as a pass. Otherwise you write it as a fail.
That's it. Now drag the formula down. Check out this. It is giving the first record pass, second record as you people said fail. Same way it is also saying the fail. समझ में आया? Could you please repeat, sir? Okay. How about this? Got it. Okay. सर So आगे people who did not get it, I'll show it again another way. मैं आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ एंड यहाँ लिख लेता हूँ एंड बोल के इज दिस इंग्लिश ग्रेटर देन इक्वल टू 40 बोल के पूछ रहा हूँ कामा सिमिलरली दिस मैथ्स आल्सो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 कामा दिस साइंस आल्सो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 bracket close and enter and drag the formula down. So it is giving all the true or false, correct? So once it is given the true or false, wherever it is a true, it is a pass. Wherever it is a false, it is a fail. Agree? So वही लिखने वाला हूँ equal to if. I'll check this. Hey, is this equal to true? If it is so, then write it as pass. Otherwise, write it as fail. Drag the formula down. Got it? Yes, sir. Yes, sir. So आपके लिए और भी होमवर्क है. ये होमवर्क भी कर लीजिए. मैं क्लियरली रिक्वायरमेंट लिख दिया हूँ. थियरी, इसको थियरी सब्जेक्ट बोलते हैं तीनों को. सोचेंगे ऐसे अज्यूम. एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है these two. थियरी सब्जेक्ट का जस्ट लाइक प्रीवियस 40 is the pass marks. All the three subjects में पास हुए तो ही theory is pass. In the practical, 25 is the pass marks. You see here, I written the 25 is the pass marks. Any one of them pass also, you are passed in the practical. ये देखो बंदा practical में पास हुआ है. Even though he got 0 marks in the practical 1, practical 2 he got the 31. 25 is the pass marks, so he got the 31. Nothing but he passed in the practical and also he passed in the theory also because theory में 40 marks pass है. यहाँ 45 है, यहाँ 55, यहाँ 90. So overall it is a pass in the theory and practical also pass. So that is the reason overall result is a pass. I am looking into this result, overall result. So आप लोग क्या करो, यहाँ and use करो नहीं तो और use करो based on the condition, get the true or false. So here is the true, here is the true, then only it is a pass. True, false, false, true. Any other conditions, it should be fail only. So that's how you need to work on. So do that homework. So there is a logical function. One last function in the logical functions I'll teach you. So here I have the 100, I have the 50. If I do the simple equation equal to 100 divided by 50. Sorry, not 50, I don't type. I'll refer to this cell. So this divided by this, it is giving the answer called 2. Yeah, 100 divided by 50 is obviously it is a 2. So if I go here, if I change this to 25, it is giving the 4. 100 divided by 25 is a 4. Now if I write the 0 here, what is the answer it is going to give here, guys? Can you tell me? 0. जीरो सर. Mm-hmm. 100. If I say enter, it is not the 0, guys. It is just divisible by 0 error. It is just divisible by 0 error. Nothing but infinite. Yes. स्कूल में पढ़े थे ना अपन डिनोमिनेटर Yes, sir, कभी yes, भी. sir. मैं बोल रहा था माइक में. मैं सुना नहीं. Okay, fine. So denominator cannot be a 0. Anytime denominator is 0, we normally we call it as a cannot be defined, infinite, ऐसा बोलते हैं. Excel language में divisible by 0 बोलते हैं. Okay, मगर कभी भी ऐसा error आए तो error नहीं बताना है. Oh, sorry, Rahul. I guess like Rahul won't understand Hindi, but sometimes I'm speaking in Hindi. So Rahul, is it manageable? Are you facing any problem with the language? No, no, sir. मुझे हिंदी आता है सर, हिंदी समझता है. But last time आप ही बोले थे ना like you No, don't no, get it. sir. मैं नहीं Not बोला you. था, शायद कोई और था, मैं नहीं था. Okay, then fine then. Is there anyone who cannot understand Hindi? Is there anyone in this batch? Yeah, कोई भी बात नहीं कर रहे बोले तो so everyone knows it Hindi. So you listen to my Hyderabadi Hindi. Equal to if error, we'll write a formula called if error. If error, this formula is asking for the two arguments, value and value of error. You give me some value. Yes, I'm giving this value. If this value is an error, what needs to be done? You need to tell it in the value of error place. In the value of error place, I'll be writing that. So I'll write that something wrong. Enter. So here you see that something wrong is showing. Because yes, it is error. For example, if I change it to 50 here, 100 to 50, there is no error. Nothing wrong. So it is not showing something wrong. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Use this if error not only on this equation like this, on top of any formula, whether it is a sum formula, VLOOKUP formula, like index formula, average formula, any formula on top of it, if that formula is giving the error, उसके ऊपर ये if error को use कर सकते हैं. Very useful formula. Escape. So this is about the logical function, guys. Let me share this file right now with you. एक बार शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए. If error को कैसे लिखना बोले तो equal to if error, you write the value. The value is equation 100 divided by 50 बोल के 50 नहीं, ये सेल को रिफर कर रहा हूँ. Then अगर ये वैल्यू जो भी दी है ना, जो इक्वेशन दी है नहीं तो फॉर्मूला लिखे जो भी है, अगर वो एरर है तो क्या करना है बोल के सेकंड आर्गुमेंट में पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ एरर. देन आई विल राइट दैट समथिंग रॉन्ग. So it is not showing something wrong because nothing wrong. If I just say hi, 100 divided by hi is error, so it is showing something wrong. Agree? मैं इक्वेशन क्या करा, डिवाइड करा ना. 100 divided by hi, it is meaningless.
So it is throwing the error here. I mean, instead of error, it is showing the message here. What are the message we given? आप कुछ भी लिख सकते हैं. Instead of something wrong, you can write it as a double quotes, or like blank. You can write anything. Double quotes nothing but blank. Otherwise, you write it as a zero. कुछ भी लिख सकते हैं ये place में. आपकी मर्जी. So let me share this file with you all. So before sharing, I hold the control key. You see this, how I'm going to take the copy of this for your practice. Hold the control and select the sheet and drag it. You can see the plus symbol. दिख रहा है ना plus symbol? इधर drag कर रहा हूँ. यहाँ drag करना है, यहाँ drag करना है. Arrow आ रहा है ना? यहाँ drag कर रहा हूँ. So इसको 2 बोल के बताता है. Instead of 2, I'll call underscore prac practice. ये कलर भी चेंज करेंगे. राइट क्लिक, टैप कलर, लेट्स से I'll change it to येलो. जो भी येलो है आपका ही है, वो प्रैक्टिस करना है. मुझे प्रैक्टिस करने के टाइम में ऐसा आंसर है तो ऑलरेडी आंसर है ना बोल के आप लोग नहीं करते. इसलिए जो भी फॉर्मुलाज लिखा हूँ ना मैं, वहाँ फॉर्मुलाज को डिलीट करता हूँ. कैसे डिलीट करने वाला हूँ? यहाँ जाके यहाँ फॉर्मुला बोल के ऐसा डिलीट नहीं करता हूँ मैं. पूरा एक ही साथ फॉर्मुलाज को सेलेक्ट करना बोले तो कंट्रोल जी, स्पेशल फॉर्मुलाज, click OK. All the formulas in this sheet got selected. Once I click on delete, it's gone. Now you see this, there are no formulas. But नहीं मुझे चाहिए, आप जो करें मुझे चाहिए बोले तो आप यहाँ आओ, यहाँ देखो, you'll get to know. Hello, जो भी sheet दिख रहा है आपका है ये, other than hello, like which are done by me. So ऐसा हर एक का शीट का मैं डुप्लीकेट नहीं कर रहा हूँ. आप लोगों का कर लीजिए. मैं आपको बताया कैसे डुप्लीकेट कर लेना और कैसा फॉर्मुलाज को डिलीट करना है. अंडरस्टूड गाइस? सर ये शीट मिलेगी कहाँ पर मुझे? अभी दे रहा हूँ मैं. शीट नहीं बोलना है, इसको वर्कबुक बोलना है. Okay. So let me go here. I am sharing this file now. I share the file in the chat box. Download it and start working with it. Sudden. All the formulas got selected now. अगर मैं टैब क्लिक कर रहा तो आपको फॉर्मुलाज का प्लेस में मिलते जा रहे हैं. राइट? सर अगर आप अब क्या स्क्रीन करते दिखा हैं? रहे हैं तो आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही है अभी अगर आपने Oh. शेयर की तो. फिर से ओके, फिर से बता दो. कंट्रोल जी बोल के क्लिक कर रहा हूँ. यहाँ गो टू बोल के आया, दिख रहा है ये हाँ सर दिख रहा है अभी. स्पेशल हाँ फॉर्मुलाज. सर स्पेशल. क्लिक ओके, फॉर्मुलाज बोल के सेलेक्ट करो. ओके बोल के बोलो. सब फॉर्मुला सेलेक्ट हुआ है. अगर टैब बोले तो भी आपको ओनली फॉर्मुला सेल्स के बीच में जा रहा है ये देखो. सो उसके बाद क्या करते हैं, फॉर्मुलाज पूरा डिलीट करना है ना. सो डिलीट बोल के क्लिक करो, गया. ओके, सेल पे क्लिक कर देना. या उतना ही. ओके. सर जो इफ एरर है वो इफ एरर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वंस मोर? I'll be discussing that if error once again with another category अपन सीखने वाले हैं VLOOKUP formula. वो VLOOKUप formula में practically I'll show you. Okay. Today itself we are going to learn that. ओके. Yeah.
So guys, hope you have done the practice. Let's see this most popular formula now. There is a VLOOKUP. Oh, this name is same repeated. You can change with some other name, guys. Yeah. So here I'm going to teach you a very important formula called VLOOKUP. I'm going to explain you the formula called VLOOKUP. So learn this VLOOKUP properly. So before I'll make you learn the VLOOKUP formula, first I'll make you learn the formula called match. So what is the exact requirement is, यहाँ मुझे एक table 1 है, पूरा employee names है, employee IDs, department, designation, region and salary. This is what the data set I have. So from this data set, what I required is, these are the employee names, right? So from these employee names, I want to know Swati Matam position number. So her position number I want to know. So if this is the requirement, how you do this? So I'll check it manually with my eyes that, hey, where is the Swati Matam in this range? Consider this as a 1, this as a 2, header is a 1. Remember, this header is a 1. There's a 2, there's a 3, there's a 4, 5, and here is a Swati Matam, nothing but position number is a 6. Enter. Can you tell me what is the next number of next number? What is the number for Arun Kashyap? 7. Yes, it is 7. Anil Kumar, please. 8. No, it is not 8. It is 9. Now tell me, Sita Mahalakshmi. Where is Sita Mahalakshmi? आपके पास भी फाइल है, देख के बोल दो. Did you find it? नो सर काफी चेक या बहुत नीचे गए तो अभी देखे तो कहाँ है समझ में नहीं आ रहा है. सो बट है. सो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड सीता. सो इन दैट केस, instead of you do manual work, let's do with the formula. Let's calculate. Let's find the position number with the formula. I'll write a formula called match. Match will match that lookup value. I mean, what you're looking for, in where you're looking. So and match type, if you give it, these 3 arguments, if you give it, it will give the position number. इससे पहले अपन आंख से कर रहे थे और formula से करेंगे. Lookup value. Here is the lookup value, comma, lookup array. What is the lookup array? Lookup array is entire employee names. You select the entire range and use a F4 to lock it. Why you need to lock? Because if you don't lock it, what will happen? G8, if you drag down for the next person, G8 will change it to G9, G359 will change it to G360. केवल तो नीचे ड्रैग करे तो रो नंबर इंक्रीज होता है ना, ये नहीं होना है. ये कभी भी एक ही रेंज देखना है, इसीलिए आई सिलेक्टेड दिस रेंज, कामा, once I put the comma, third argument is giving the less than, exact match, greater than बोल रहा है. I'll go with the 0. 0 means exact match. Bracket close and enter. You see the 6. So nothing but yes, स्वाति मतम का पोजीशन नंबर है 6. अपन मैनुअली कैलकुलेट करके 6 ही बोले थे, ये भी 6 ही आया फॉर्मूला से भी. नीचे ड्रैग करके देखो 7 9. Oh, Sita Mahalakshmi is 347. Is this clear, guys? यस सर Everyone Sir, can you subscribe. please repeat it? Okay, करेंगे, no problem. पहले रिपीट करने से पहले ये बात बोलो, आपको मैनुअली ये मैं कैसा लिखा 6 7 9, ये क्यों लिखा हो समझ में आया? आई मीन हाउ इट इज अ 6. स्वाति मतम को देख रहे हैं अपन, ये कहाँ है? 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 बोल के लिखे थे. एक ऐसा तो नहीं कर सकते ना, इसीलिए फॉर्मूला लिखा था. सो वो फॉर्मूला फिर से बता रहा हूँ. सो इक्वल टू match formula is asking for the lookup value, what you are looking for. I am looking for this value. Don't look all of them at a time. एक बार में एक ही देखना है. So lookup value is this, comma. Okay, इनके लिए देख रहे हैं, मगर कहाँ? lookup array में बोलना है वो. कहाँ देख रहे हैं? यहाँ पूरा employee names है, इन नाम में देख रहे हैं. So select this entire employee name, but don't forget to lock it. ये बहुत लोग क्या बोलते हैं, भूल जाते हैं. So मत बोलो आप, use a F4 so that will get locked. Comma 0. 0 means exact match. Exactly we are looking for Swati Matam only. So उसीलिए 0 बोल के लियो. 99% of the time we'll take this exact match. So go with the 0, bracket close and enter, and drag the formula down. Is this clear? हेलो सर, लॉक करने के लिए शॉर्ट फॉर्म क्या F4 की बोला मैं, F4 या F4 F4 काम नहीं कर रहा था, फंक्शन की विद F4 F4 else फंक्शन कीज के साथ F4 ऐसा है. हाँ सर, वो रो सिलेक्ट करने के बाद में करनी है, लॉक हो जाएगा. पूरा रेंज करने के बाद पूरा रेंज को सेलेक्ट करना, ऐसे सेलेक्ट करते हैं ना, ऐसे सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट करते कि F4 बोल के बोलो, हो जाता है ये. ओके प्रतीक. ओके सर. Yeah.
ये इसीलिए ये अब पूछने का बात नहीं है एक्चुअली, ये फ्रीजिंग टेक्निक्स में बात कर रहा था, या मैं पूरा शॉर्टकट भी दिया हूँ। देखो इन सम लैपटॉप्स लाइक F4 वोंट वर्क, इन दिस केस फंक्शन की विद F4 यूज़ करो, नहीं तो नॉर्मली F4 काम करता है। दिस ऑल टेक्निक्स वी लर्न इन द प्रीवियस क्लास। Okay, cool. So I suggest you go through the previous recording so that you'll get so much information related to freezing techniques. Now one more example. This time instead of employee names, I have the employee IDs. I need to know their position number. So I'll write the match. This is the lookup value, comma, lookup array. Where is the lookup array? The lookup array is this entire range. Select this employee ID column and without fail, क्या करते हैं आप? मम्मी बावला After selection of the entire range, use a F4. Once you use F4, $4 you should be able to see. Column H is locked, row number 8 is locked. Column H is locked, row number 359 is locked. Total कितना हुआ डॉलर्स? 4 है। अगर 4 नहीं है बोलते कुछ गलती करे बोल के, कामा 0 0 बोलते क्या है? एग्जैक्ट मैच। Bracket close and enter. Now you can see this employee ID EMP0553 is in the row number 6. If I drag down, yes, it is giving the output. But here it is giving the error because there is no employee ID called EMP0219. So इसीलिए error दे रहा है, no problem. अगर आपको error नहीं दिखना है बोले तो क्या करते हैं आप? आज बोला था मैं, कुछ भी error आए तो अगर आपको error नहीं दिखना बोले तो क्या करते हैं? सर वो ये if error वाला फॉर्मूला लगाना होगा। Absolutely, we use this if error, but where do you use? On this first cell or in this third cell? सर पार्सल पे यूज कर सकते हैं। Obviously, you should use it in the first cell only. So you use on top of it like a match if error बोल के टाइप करो। if error, अच्छा सुनो, if error क्या पूछ रहा है? वैल्यू दो बोल के बोल रहा है। वो वैल्यू अपन दे रहे हैं कहाँ से? मैच फॉर्मूला से दे रहे हैं। वो मैच का आउटपुट जो भी आता है अगर वो एरर नहीं आया तो वेल एंड गुड, अगर एरर आया तो क्या करना है? वो सेकंड आर्गुमेंट में बोलना है, कामा वैल्यू एरर में विल राइट इट एज समथिंग रॉन्ग, एंटर। देखो यहाँ समथिंग रॉन्ग बोल के नहीं दिख रहा है, ड्रैग इट डाउन, यही दिख रहा है क्यों? तो यही रॉन्ग है, उसीलिए वो समथिंग रॉन्ग बोल के बता रहे हैं, मगर यहाँ नहीं। अंडरस्टूड? सर यस सर। यस प्लीज। सर मेरे इसमें ये हैशटैग नेम और क्वेश्चन मार्क लिख के आ रहा है पोजीशन के इसमें। हैशटैग नेम और क्वेश्चन मार्क लिख के आ रहा है। बोले तो आप मैच फॉर्मूला को मैच नहीं लिखे होंगे, दूसरा कुछ लिखे होंगे, इसलिए ऐसा आ रहा है। आपका स्क्रीन शेयर करो, सबको बता देंगे। एक मिनट, आप जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला के सिवा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करे आप। एक मिनट सर, I'm checking। नो प्रॉब्लम, शेयर करो। उधर जाओ, उस सेल के पास जाओ। फॉर्मूला नहीं नहीं नहीं, डिलीट मत करना, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। या आप क्या लिखे? MAT, जाइए वहाँ, वो सेल पे जाइए ना प्लीज, MATCH। थोड़ा जूम करे तो आप G8 to G359, उसके बाद F बोल के दिख रहा है। देयर इज नथिंग, F4। F4, कम ऑन, F4 आप लॉक करने के लिए है। सो हाँ सी ओके, वो छोड़ दीजिए, आप एक सेल क्लिक, दूसरा सेल कौन सा क्लिक करिए, दूसरा सेल वो छोड़ दीजिए, दूसरा सेल इक्वल टू बोल के लिखो, A1 बोल के लिखो, A1 टाइप करो, A1 यूज F4, F4 यूज करो। F4 बोले तो F4 बोल के F लेटर 4 लेटर बोल के नहीं, F4 बोले तो फंक्शन कीज ऊपर आपके लैपटॉप में ऊपर रहता है, देखो F1 F2 F3 ऐसा रहता है, देखो आई एम उसको प्रेसिंग दैट, बट जब भी मैं F4 प्रेस कर रही हूँ तो ऐसा फंक्शन हो की विद रहा है। F4 नहीं, देन यू ट्राई द फंक्शन की विद F4। दिस इज फंक्शन की विद F4, ये ऐसे हो रहा ओके, आपका मैक है ना ये? है। हाँ सो ओके, आई विल टेल यू, कमांड कंट्रोल और लाइक आई मीन कमांड बटन रहता है ना, और उसके साथ F4 ट्राई करिए। कुछ नहीं हो रहा सर। ओके, अभी बोला। आई थिंक सो, दिस इज सर। इज इट वर्किंग नाउ? या राइट। या वैसा करना है, वैसा डॉलर्स आना है। सो हाँ आप या सो व्हाट यू रिटन जस्ट F4, सो दैट इज द हाँ रीजन इट वाज नॉट वर्किंग। अंडरस्टूड? या सो व्हाट इज द शॉर्टकट की इट वाज शोइंग? कमांड बटन विद द FN प्लस ऊपर का F4 फंक्शन 4। या ओके। ओके सर। ये चैट जीपीटी तो बोल रहा है कमांड बटन विद द टी बोल के भी बोल रहा है, एक बार ट्राई करके देखो, कमांड बटन विद द टी, टी, टी फॉर टेबल, या कमांड बटन विद द टी ट्राई करो, टी, टी फॉर टेबल आ रहा या है? या यस। सो मेरा स्क्रीन बताता हूँ, आपका स्क्रीन स्टॉप करो।
लाइक यहाँ देखे तो मैं पूछा इसको एक्ट एज एक्सेल ट्रेनर अभी लाइक F4 इज शॉर्टकट की टू फ्रीज द सेल्स इन विंडोज एक्सेल हाउ अबाउट द मैक एक्सेल क्यों मतलब मैं मैक यूज नहीं करता हूँ सॉरी टू से आई डोंट लाइक इट सो इन मैक एक्सेल इट इज गिविंग आंसर सो ओवरऑल इट इज गिविंग दिस बोल्ड ये पूरा पढ़ने से अच्छा डायरेक्टली बोल्ड भी बता दे रहा है ना कमांड बटन विद द टी सो आई वाज नॉट वेरी मच श्योर दैट इज द रीजन आप ट्राई करके देखो कमांड बटन विद द टी बोल के पूछा आप करे हो गया सो इफ दिस काइंड ऑफ स्मॉल थिंग्स इफ यू आर फेसिंग इन इश्यूज गाइस आस्क ChatGPT बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू ये सॉल्व करता है ऐसे छोटे छोटे वाले तो और भी अच्छा बोलता है Okay, sir. Now let's move on. Now, one last example of the match. I have this headers. अगर मैं आपको पूछा तो where is the employee ID in this range? Where is the employee ID? What do you say? I mean, which position number? Employee name is 1. Employee ID is what? सेकंड 2. Second. Nothing but employee name is 1. Employee ID is 2. Department is 3 and so on. So अगर मुझे सैलरी का पोजीशन एम्प्लॉय आईडी बोले तो 2 बोल के लिखते हैं डिपार्टमेंट बोले तो वहां जाके कितना है बोल के देख के लिखते हैं 4 की 5 की ऐसा कुछ सो instead of I type like this 5 and the salary is 6 and all you don't type like this instead you see this employee name is 1 employee is 2 department is 3 designation is 4 and region is 5 and salary is 6 right so same thing I required it by using the formula I'll write a formula called match once I write this formula called match it is asking for the lookup value what you are looking for I am looking for this value comma lookup array what is the lookup array the lookup array is this entire range select this entire range use a F4 once you use a F4 so it will get locked completely क्यों लॉक कर रहे हैं अगर राइट साइड गए तो ये G क्या होता है H होता है L क्या होता है M होता है H से M बोले तो ये रेंज हो जाता है ना एड्रेस चेंज होता है ना इसलिए सेम रेंज को सेलेक्ट करके फ्रीज कर दो तो $4 भी दिखना है आपको कामा 0 बोल के लिखो 0 मीन्स व्हाट एग्जैक्ट मैच ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर नाउ यू सी दिस एम्प्लॉय आईडी बोले तो कहाँ है सेकंड पोजीशन में ना वही नंबर दिया है नहीं मुझे एम्प्लॉय आईडी ने मुझे सैलरी बोल के बोलते कि एंटर ये शोइंग द 6 बट लेट इट बी एम्प्लॉय आईडी इफ आई ड्रैग राइट साइड it is showing this position numbers 2 3 5 6 whatever number it is got it One time repeat, please. this is the same formula we are writing the third time match formula not third time actually fourth time equal to match earlier we written vertically this time we're writing horizontally that is the only difference equal to match lookup value is this comma lookup array what you're looking for you're looking for some header all the headers are whether it is employee ID header or employee name header anything all these headers are here select them lock it without fail और आपको और एक easy technique बोलता हूँ कहाँ भी आपको array बोल के word है तो वो lookup array रहने दो table array रहने दो कुछ भी रहने दो array बोल के दिखे तो select करने के बाद blindly F4 मारो lock it completely बोलो मत comma 0 means exact match we are looking for exact match bracket close and enter it is giving the 2 Sir, so can now you please share your screen too? come on I'm sharing already you stop Uh, your screen sharing you were sharing earlier right I do one thing I'll stop everyone's I'm sharing mine again okay Okay, sir. so this is a match formula we written cool now you see guys this is a match formula why we learn this match formula अभी तक मालूम नहीं है खाली कुछ पोजीशन नंबर बोल रहा है नंबर आ रहा है उतना ही देखे मगर ये नंबर से क्या यूज है अपन को नहीं मालूम अभी तक we are going to learn that so you see here I'm going to teach you basic VLOOKUP function now this basic VLOOKUP function so what is this VLOOKUP is VLOOKUP stands for vertical lookup VLOOKUP stands for vertical lookup okay so you have the employee names employee IDs department designation 6 columns का data है in multiple rows right so ऐसा है नीचे तक गए तो कंट्रोल डाउन एरो almost 350 प्लस रिकॉर्ड्स है अपने पास so what we required is we want to know these people related employee ID department region salary बोले तो क्या है स्वाति मतम का एम्प्लॉयडी क्या है स्वाति मतम का डिपार्टमेंट क्या है स्वाति मतम का रीजन और उनका सैलरी और नेक्स्ट अनिल कुमार का एम्प्लॉयडी अनिल कुमार का डिपार्टमेंट रीजन एंड सैलरी ये पता करना है so when I was not aware about the VLOOKUP formula the way I used to do is I used to check for Swati Matam where is Swati Matam I used to check once I found her I used to select this entire data control C for copy come here and paste it then Anil Kumar यहाँ है कॉपी करो पेस्ट करो और सीता महालक्ष्मी कहाँ है ओ उन कहाँ के नीचे है उनका कॉपी करके पेस्ट करना बहुत मुश्किल है सो आई डोंट वांट टू डू इट लाइक दिस मैनुअली वन बाय वन instead I am going to show you the formula now so that formula is a VLOOKUP earlier मैं आंखों से देख के कर रहा था instead of I do with my eyes let's look with the formula called let's use the formula called VLOOKUP how many of you are already aware about the formula called VLOOKUP guys anyone of you are aware about the VLOOKUP formula earlier no sure no problem
So I'll show you formula called VLOOKUP. Equal to VLOOKUP, very important formula है. Both interviews में commonly पूछते हैं. VLOOKUP सीख लो please. So equal to VL टाइप करो. 1 second. Equal to VL टाइप करते हैं कि VLOOKUP बता रहा है. दूसरा पूरा लेटर्स लिखने का जरूरत नहीं है. आपको क्लिक ऑन टैप करो. Remaining all the 4 arguments will shows you. But if I remove this parenthesis, it will show you the definition of this formula. It's saying that looks for a value in the leftmost column of a table. फिर से पढ़ रहा हूँ. It looks for a value in the leftmost column of a table and then returns a value in the same row from a column you specify. So that's what it's saying. So equal to VLOOKUP. So what it means, like a leftmost column बोल रहा है, कुछ row बोल रहा है. We did not get it much. Don't worry. Understand here that we have some 6 columns of data. In the 6 columns of data, there's a first column, there's a second column, third, 4, 5, 6. That's cool. But my requirement is what? So I want to know like these employees related other details, this right side details. So VLOOKUP कभी भी याद रखो, it will always look in the leftmost column of table. Leftmost बोले तो क्या है? ये 6 columns में जो first column है उसको leftmost column बोलते हैं. अगर आपके टेबल में 10 कॉलम्स है, सोचो जो फर्स्ट कॉलम है ना, जो लेफ्ट साइड कॉलम है ना, उसको लेफ्ट मोस्ट कॉलम बोलते हैं, नहीं तो फर्स्ट कॉलम में बोल सकते हैं, राइट. सो VLOOKUP कभी भी वो टेबल, जो भी टेबल देते हैं ना, वो टेबल में फर्स्ट कॉलम में ही देखता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं देखता है, फर्स्ट कॉलम में ही देखता है. सो इन अदर वर्ड्स, व्हाटएवर द लुकअप वैल्यू यू आर गोइंग टू लुक, दैट शुड बी योर फर्स्ट कॉलम. अगर आप लुकअप वैल्यू इज एम्प्लॉय नेम शुड बी फर्स्ट कॉलम. ओके फाइन, लेट मी राइट दिस VLOOKUP नाउ. Equal to VLOOKUP, it is asking for the lookup value. Hey, I'm looking for Swati Madam. I look for this value. Once I look for this value, O24, 4, 4, 4,
other details, this right side details. So VLOOKUP कभी भी याद रखो, it will always look in the leftmost column of table. Leftmost बोले तो क्या है, ये 6 columns में जो फर्स्ट कॉलम है उसको leftmost column बोलते हैं. अगर आपके टेबल में 10 कॉलम्स है, सोचो जो फर्स्ट कॉलम है ना, जो लेफ्ट साइड कॉलम है ना, उसको लेफ्ट मोस्ट कॉलम बोलते हैं, नहीं तो फर्स्ट कॉलम में बोल सकते हैं, राइट. सो VLOOKUP कभी भी वो टेबल, जो भी टेबल देते हैं ना, वो टेबल में फर्स्ट कॉलम में ही देखता है, सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं देखता है, फर्स्ट कॉलम में ही देखता है. सो इन अदर वर्ड्स, व्हाटएवर द लुकअप वैल्यू यू आर गोइंग टू लुक, दैट शुड बी योर फर्स्ट कॉलम. अगर आप लुकअप वैल्यू इज एम्प्लॉय नेम शुड बी फर्स्ट कॉलम. ओके फाइन, लेट मी राइट दिस VLOOKUP नाउ equal to VLOOKUP. It is asking for the lookup value. Hey, I'm looking for Swati Matham. I look for this value. Once I look for this value, O24,